In the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Assalamu alaikum. Today we will start class 10, subject Math Science group. First of all, subscribe my channel, like videos, share videos with your friends, and also click on bell icon so that you have to get updates about my new videos. So we will start unit number 6, MCQs with concept. Class 10th, unit number 6, basic statistics, part number 1. Let's see. First MCQ. A grouped frequency table is also called data. B option frequency distribution and C option is frequency polygon. So let's see its definition. Open page number 108 and let's see the definition of frequency distribution is a tabular arrangement for classifying data into different groups and the number of observations falling in each group corresponds to the respective group. The data presented in the form of frequency distribution is called group data. It means which frequency is involved, that is known as a group data. Frequency is not involved, that is known as ungrouped data. Let's see its second MCQ. A histogram is a set of adjacent. Adjacent means neighbor. A option squares, B option rectangle, C option circles. So its correct option is B. So its correct option is B, rectangles. How? Let's see the definitions of histogram or its graph. Let's see, that is the histogram. So in histogram you have construct rectangles, small rectangle, large rectangle, and previous rectangle is adjacent to the next. So अब previous जो है वो पीछे वाली rectangle के साथ adjacent है, मिली हुई है. So its correct option is rectangles. So a histogram is a set of adjacent rectangles. Now, third MCQ, a frequency polygon is a many-sided closed figure, rectangle, square. So let's see the definition of frequency polygon or its graph. So let's see, that is the graph of frequency polygon. So check that it starts from 0 and it move and end at 0. ये 0 से start होता है और फिर 0 पे आके end होता है. ना तो ये square है ना ही ये rectangle. That is the closed figure. Open page number 115. Frequency polygon graph is mentioned here. Let's see also the definition of frequency polygon. A frequency polygon is a many-sided closed figure. So a frequency polygon is a many-sided closed figure. Its correct option is A. Fourth MCQ, a cumulative frequency table is also called A option frequency distribution, data less than cumulative frequency distribution. Its correct option is C. How? Open page number 115 and let's see. A table showing cumulative frequencies against upper class boundaries is called a cumulative frequency distribution. It is also called a less than cumulative frequency distribution. That is the another name of cumulative frequency distribution. So a cumulative frequency table is also called less than cumulative frequency distribution. Now let's see fifth MCQ. In a cumulative frequency polygon, frequencies are plotted against A option midpoints, B option upper class boundaries, C option class limits. So its correct option is upper class boundaries. How? Let's see. Open page number 116 and see its step number 2. Plot the points for the given frequencies corresponding to the upper class boundaries. That is the correct option, upper class boundaries. So in a cumulative frequency, polygon frequencies are plotted against upper class boundaries. Let's see its 6th MCQ. Arithmetic mean is a measure that determines a value of the variable under study by dividing the sum of all values of the variable by their number. So let's see its formula. For example, 2 plus 3 plus 4. You have to find its arithmetic mean. So 2 plus 3 plus 4 and how many values? 1, 2, 3. So divide by their number 3. 4 plus 3 7 plus 2 9. Now 3 3 the 9. So its arithmetic mean is 3. So divide by number. So its correct option is A, number.
Seventh MCQ, a deviation is defined as a difference of any value of the variable from a constant. Its correct option is constant. How? Let's see. Now open page number 119. Deviation is defined as a difference of any value of the variable from any constant. So underline the constant. Its correct option is constant. So a deviation is defined as a difference of any value of the variable from a constant. A option is the correct option. Now let's see its eighth MCQ. A data in the form of frequency distribution is called group data, ungrouped data, histogram. In first MCQs I have told you that the data which is involved frequency, that is known as a group data. So ninth MCQ is mean of a variable. Now let's see. Mean of a variable with similar observation, say constant k is negative, k itself or 0. Its correct option is B. How? Let's see its solution. Open page number 129. See the properties of arithmetic mean. Mean of a variable with similar observation. Keyword here similar observation. Say constant k is the constant k itself. So its correct option is k itself. Also here see the property of mean is affected by change in origin and change in scale. ये मैं आपको सॉल्व करके भी बताती हूँ किस तरह से ये इफेक्ट होता है. Open page number 130. Mean is affected by change in scale. Now on the same page 130, property of arithmetic mean is mentioned here. Sum of the deviations of the variable x from its mean is always 0. ये भी मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगी. So mean is affected by change in origin, mean is affected by change in scale. Now the last MCQ of part number 1, 12th MCQ. Sum of the deviations of the variable x from its mean is always 0. ये प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको पेजेस मार्क करवाए हैं प्रॉपर्टीज़ के, और आप ये सॉल्व करके भी, आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है तो मैं उसको सॉल्व करके भी आपको बता देती हूँ. ठीक है. हाउ मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ऑरिजिन एंड चेंज इन स्केल, ये मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ. यू हैव टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स. यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू ली है 1 2 3 4 वैल्यू ले ली और मैंने इनका टोटल कर लिया 10. इसी तरह अब एक्स की वैल्यू में कोई एक नंबर ऐड कर दो तो वो ऑरिजिन बनेगा, चेंज इन ऑरिजिन. ठीक है. अब एक्स है, इसमें मैं 5 ऐड कर देती हूँ तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और 5 + 1 6, फिर 5 + 2 7, फिर 8 और फिर 9, और ये नया एक वेरिएबल बन जाएगा. वाई का नाम मैंने दे दिया. ठीक है. अब इसका अरिथमेटिक मीन एक्स का फाइंड किया, सम ऑफ एक्स बाय एन, इसका टोटल लिया 10/4, तो ये अरिथमेटिक मीन आया 2.5. इसी तरह y का अरिथमेटिक मीन फाइंड किया तो वो 7.5 आया. अब देखें चेंज इन ऑरिजिन, मीन अफेक्ट हुआ है ना, यहाँ पे 2.5 था, चेंज इन ऑरिजिन किया तो 7.5 हो गया. ठीक हो गया. इसी तरह चेंज इन स्केल, चेंज इन स्केल का मतलब है कि आप x को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करो या 10 से. यहाँ पे मैंने 5 से कर दिया. 5 1 द 5, 2 द 10, 5 3 द 15 एंड 5 4 द 20. टोटल इसका 50 आ गया. इसको मैंने नया वेरिएबल का नाम दे दिया z. इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड किया तो 12.5 आ गया. अब देखिए चेंज इन ऑरिजिन और चेंज इन स्केल दोनों के मीन्स जो है ना वो डिफरेंट आए हैं. ठीक हो गया. इसका मतलब है कि चेंज इन ऑरिजिन और चेंज इन स्केल अफेक्ट करता है मीन को. ठीक हो गया. अब इसके बाद डेविएशंस, लास्ट MCQ था 12th MCQ, उसमें मैंने समझाना था कि डेविएशन आप किस तरह से फाइंड करते हैं. मीन x माइनस एक्स बार, जैसा कि ये आपको लिखा नज़र, एक्स बार और अरिथमेटिक मीन 2.5 मैंने फाइंड किया. अब 1 - 2.5, 2 - 2.5, 3 - 2.5 एंड 4 - 2.5, ये वैल्यूज़ आ गई. इनको मैंने प्लस किया तो ये 0 आ गया. ठीक है. सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन इज़ 0, ये आपके पास आ गया. ये तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन था ना. आप इस डेविएशन इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं. डेविएशन का फॉर्मूला x - a, ये वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है. जो आप डाटा में सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल x हमारे पास है, मैं इधर लिख देती हूँ, x है हमारे पास 1 2, ठीक हो गया, और 3. ठीक है. अब d मैंने फाइंड करना है तो मैंने इसी में से मैंने वैल्यू a लेट कर लिए इसी के अंदर से. ठीक है. x - 2 आ गया. अब माइनस करें तो -1 0 और फिर 1, इनको प्लस करें, सम ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. ठीक हो गया. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द MCQs ऑफ यूनिट नंबर 6 विद कॉन्सेप्ट. So Allah Hafiz to all of you, and first of all subscribe my channel, like videos, share videos with your friends, and click on bell icon, and also click on
all options so that you have to get updates about my new videos. So take care of yourself. So Allah Hafiz.